Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है Vinamre Kasana. If you're new to my YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. If you're listening to us on an audio platform, make sure you give us a 5-star rating because we're the best in Bharat. Having said that, आज की हमारी गेस्ट का नाम है Disha Ahluwalia. She's a hardcore archaeologist. She recently came back from the Harappan archaeological site known as Rakhigarhi. तो उसके बारे में चर्चा करी, हरप्पन पूरी सिविलाइजेशन के बारे में बातचीत करी. वी पुट अ लॉट ऑफ मिथ्स टू रेस्ट. हम लोगों ने सनौली के फेमस चैरियट्स के बारे में बात करी और एक्चुअली हम लोग निटी ग्रिटीज़ के अंदर डाइव करें कि एक आर्कियोलॉजिस्ट का जीवन कैसा होता है. मुझे तो काफ़ी मज़े आया. आई थिंक व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट डू इज़ अ पेन्सटेकिंग जॉब दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ पैशन. गर्मी में जाके डिगिंग करना. So I had a blast talking to Disha, and I'm sure you're going to feel the same. The episode with archaeologist Disha Ahluwalia begins in 3, 2, 1. Disha Ahluwalia, welcome to Dostcast. How's it going? Going good. Thank you for making your way to Faridabad in this absolute heat. उसी नोट पे पूछना चाह रहा था, I saw some photos of you where you said that मैं राखीगढ़ी की साइट पे हूँ and you had this hood on your face and it was 44 degrees. And you said like it's जो डिस्कम्फर्ट है गर्मी में रहने का टेंट में, इट्स सो मंडेन कंपेयर टू द जॉय ऑफ एक्सकवेटिंग समथिंग लाइक राखीगढ़ी, राइट? बट मैं आज भी सोच रहा था, मैं यहाँ पे आ रहा था, मैंने कहा यार शिट, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं बाहर जाऊँगा इट्स जस्ट गोना सोक मोर हीट. व्हाई डू यू वेयर मोर क्लोथ्स इन द सन? The reason we wear more clothes is because it's very difficult when you're exposed directly under the sun. And the timings, when we're working is usually right when the heat is direct at you. Secondly, the sandstorm. ये जो सीज़न है अभी मार्च से मई अप्रैल, ये जो मंथ जून तक का सैंडस्टॉर्म बहुत चलता है. तो जो धूल मिट्टी होती है वो स्किन को एक तरीके से छिल देती है. सो यू डू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिकॉज टैनिंग टेक्स टाइम टू गेट रिड ऑफ. सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. So do archaeologists just get tanned over time? Oh yes, we do. Yeah? Yeah, and it takes a lot of time to get rid of that tanning. But then at the end, I think you start liking it, becomes part of your, your attire, persona, your skin. It becomes part of it. Physical exercise कितनी involved होती है? Like is it like you just stop your car at a place and then from there you walk to a site that's kilometers away? Like how does that happen? Kabhi, yes. It depends on where a site is. If the site is right middle of, cultivated land where there is no access to road, then maybe you have to walk, to a certain extent. Right. But like in the case of Rakhigarhi, our camp was right on the site. So we can just get up in the morning, and then go to the site. So it was not that difficult to कम्यूट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं था. बट साइट पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत होता है बिकॉज यू हैव टू यू एक्सकवेटिंग एंड यू एक्सकवेट विद ट्रॉवल्स. सो यू हैव टू डू इट विद ट्रॉवल्स, छोटे वाले. या इट्स करनी बोलते हैं उसको. अच्छा. जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है बट उसका थोड़ा शेप आर्कियोलॉजी के लिए थोड़ा अलग करते हैं हम. जो करनी यूज़ करते हैं ना, इफ़ यू सी कंस्ट्रक्शन में वैसा ही शेप होता है. सो वी यूज़ बेसिकली ट्रॉवल्स एंड नाइव्स एंड स्मॉल टूल्स फॉर एक्सकवेशन. बड़ी जो गेती वगैरह होती है उसके लिए वी डू हैव पीपल लाइक लोकल्स. That's what I was gonna ask you because I saw your Instagram. You had one that had your name engraved on it, right? Yeah, that's trowel. That's his trowel, right? So what happens is कि जो ये your staff who does the heavy digging, जो बड़े वाले फावड़े लेके वो हटा देते हैं, and then you nitpick. Is that how it happens? Yes, so it's a combination of both. Okay. So kabhi we have to just use the trowel and nothing else because if we know नीचे कोई structure है, especially mud brick का कोई structure है जो कि pickaxe से खराब हो सकता है, तो we do it very carefully. But if we have assessed कि okay यहाँ पे जो हम यहाँ पे इसको sacrifice कर सकते हैं और यहाँ पे structure नहीं है बल्कि it's an open space, then we use big tools. So what do you mean by that? हम क्या sacrifice कर सकते हैं exactly? मतलब साइट फॉर्मेशन होता है राइट. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके आसपास भी काफ़ी डिपॉजिट बाद में आके इकट्ठा हो जाता है. फॉर इंस्टेंस यू हैव अ वॉल एंड देन देयर इज अ रूम. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वॉल्स विल कोलैप्स. ठीक है, उन वॉल के कोलैप्स के ऊपर भी डिपॉजिट आएगा, बारिश का पानी होगा या हवा से मिट्टी इकट्ठा होगी, देन उसके ऊपर भी अगर कोई एंथ्रोपोजेनिक या बाद में कोई एक्टिविटी हुआ तो वो सब होगा. एंथ्रोपोजेनिक, व्हाट इज दैट?
ह्यूमन से रिलेटेड, मतलब अच्छा. हम जो चीज़ें छोड़ते हैं लाइक वो एंथ्रोपोजेनिक होती है. फॉर इंस्टेंस द ग्लास ऑन योर टेबल, इफ यू कीप इट लाइक दिस एंड इट्स अबैंडन्ड, सो दिस इज विल बी एन एक्टिविटी, सो दिस इज एन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. सो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन वी आर एक्सकवेटिंग अ साइट. सो वी नीड टू पिक वेयर वी कैन यूज़ व्हाट टूल, एंड you can actually understand with excavation. अब जितना excavate करोगे उतना आपको idea हो जाता है. Is there a process for this? We have few standardized things that we follow. For instance, the trenches. Our trenches usually... Trench, sorry, I'm just being very basic here. Yeah, Trench is sure. गड्ढा मतलब गड्ढा, right? So our pits. So जो pit हम excavate करते हैं उनका एक particular size होता है और usually वो square होते हैं, ठीक है. And in ASI traditionally we excavate 10 meter by 10 meter का trench, और in universities people also take a 5 meter by 5 meter का छोटा pit. To learn on. Yeah, to मतलब to see कि इसके आगे और क्या है. तो हम पूरा side कभी excavate नहीं करते हैं. उस ट्रेंच के जो 4 वॉल्स होते हैं, मतलब स्क्वायर के जो 4 कोने होते हैं, दे हैव टू बी 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट. सो दे आर सेक्शन वेयर वी सी द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड ऑफ द ट्रेंच, एवरीथिंग. Mound is is an archaeological site. Okay, that's what you identify it Tila. as, right? टीला, जैसे कि राखीगढ़ी के अंदर you've named them as RGR 1, 2, 3, 4. Yeah, so Rakhigarhi has 7 mounds so far. Of course, some people also suggest that there are more than 7 mounds. Like there are scholars who have done the work, but the work is still in the process to be peer reviewed. So far there are 7 mounds. How do you peer review a site जहाँ पे literally physical involvement की ज़रूरत है? See, journal में जब publish होगा कोई data, एक तो वो बात है कि then only it's accepted by academia. Another thing is that you need to, when you say Rakhigarhi is a city, for instance Delhi is a city. Now we are sitting in Faridabad. Faridabad is in NCR. It's not technically Delhi, you know, but you have As we've been told painfully over the years. Painfully, exactly. So we need to understand what comes within the core of the city, Harappan city of Rakhigarhi, and what are the satellite sites. Okay, so till all these analysis and assessments are made and accepted by, you know, people, and people start quoting them in their papers and everything, till then we like to just keep it 7 mounds for now. Okay. Yeah. And I'm just wondering, what is a field season? Okay, field season is when we are excavating. So हम पूरे साल excavate नहीं कर सकते हैं. You're not JCBs. Yeah, we are not JCBs. Very good point. We are not. एक तो गर्मी बहुत होती है. गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है because our productivity becomes very less, literally zero. It's very difficult. बारिश में हम काम नहीं कर सकते हैं because जो structures होते हैं वो expose होते हैं और उनको conservation करने से पहले उनको अगर ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम होता है. तो हम बारिश के सीज़न में काम नहीं कर सकते. तो गर्मी मतलब अप्रैल मई से लेके बारिश जब तक ख़त्म नहीं होती है बीच का टाइम, तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास जो टाइम रहता है वो है नवंबर या अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च, मैक्सिमम अप्रैल तक. सो ये जो पूरा सीज़न है, ये पूरा टाइम पीरियड एक सीज़न होता है. इसको हम फील्ड सीज़न बोलते हैं. तो हमारे जो लाइसेंस भी हम आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है उसमें भी यही सीजन मेंशन होता है. You have a license to operate as an archaeologist? For example, अगर मैं एक citizen हूँ, I can't just accompany you and start digging myself? No, you need to take license from the central government, Archaeological Survey of India. So ASI और एक कमिटी भी है काबा, which basically reviews your proposals and gives you license. तो अगर क्या होगा अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट जाके मतलब जिसका लाइसेंस भी हो थोड़ी गलत से तोड़ फोड़ कर दे, would there be consequences? Yes, there will be. So because हमें हर किसी को जो भी एक्सकवेट करता है उनको एक रिपोर्ट ASI को देना होता है. इट्स मैंडेटरी. आप यूनिवर्सिटी से हो या कहीं से भी हो, you have to submit a report to ASI and ASI monitors it. ऑफ कोर्स अगर आप हार्म कर रहे हो कोई स्ट्रक्चर को या किसी चीज़ को, तो ऑफ कोर्स दे आर कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज द मोमेंट यू एक्सकवेट एनीथिंग दैट यू टेक आउट बिकम्स पार्ट ऑफ द एंटीक्वेरियन लॉज दैट प्रोटेक्ट द एंटिक्विटीज़, फॉर द सेक ऑफ कि वो स्मगल ना हो या उस सब को प्रोटेक्ट करता है. तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बीन मॉनिटर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये
we know for sure that the word archaeology exists, but as far as coming in the public eye या फिर कोई उसकी public communication हो ना, India के अंदर we haven't had too many examples, and the only sort of examples at least that I've seen is in documentaries where one archaeologist is in a team of 7 experts saying 2 lines about something specific that they found on the ground. So why do you think is it just a harder field to get through and make the general public understand, या फिर is it just that you can't always extrapolate from like a finding you did कि उसका इतना कोई रहस्यमयी कोई स्टोरी नहीं बन पाएगी, maybe it's just like some pot, right? Both. Very interesting question, and both points are very very interesting. Actually दोनों चीज़ें हैं. एक तो ये है कि बेसिक्स आर्कियोलॉजी की क्लियर ही नहीं है. लाइक हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, राइट? एक पॉइंट के बाद हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी मर्जेस टुगेदर, बट आर्कियोलॉजी की टेक्निकलिटीज लोग समझते नहीं हैं. People think that it's easy to go, are they just digging, and then why are they not telling us what exactly is what? They ask you questions, but it's a very tedious process. It's a slow process, and उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक एक्सकवेशन ही नहीं, बट साइंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. सो आप हमें आंसर्स ऑन द स्पॉट नहीं मिलते हैं. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ ये मुझे ये मिला एंड ये इसलिए प्रॉबेबली यूज़ होगा, बट आई कैन टेल यू कि दिस इज़ वॉट it was used for a pot, right, for instance, because to tell you exactly what this pot was used for, ये pot का क्या purpose था, मुझे काफ़ी ज़्यादा scientifically उसको analyze करना पड़ेगा, and that take years. So एक तो ये point है कि हम एकदम से on the spot can't give you answers. And you can't do conjecture professionally. We can't do conjecture. I mean, we should not. I mean, it's like an unsaid thing कि conjecture ना करे तो better है. And I often tell this to people who work with me, and when I'm training a big batch, I always tell them conjecture ना हो तो better है. अगर हम कोई चीज़ को imagine भी कर रहे हैं कि इसका superstructure ऐसा होगा, you have to see the evidence in field, right? Only then your work will be of value, because conjecture तो subjective हो गया ना. I see a particular pot, I tell you it was used for water storage. You will see it, you say अरे नहीं यार ये तो खाना बनाने के लिए है. Or even worse, you're like ये कोई 7वीं सदी की राजा का आखिरी वो message है. Because the human mind wants to cook up stories, exactly, right? Exactly. It looks very good to the media as well. Yeah. It looks good to the people. That's how a human interest develops in that. Exactly. If there's a story. Yeah, so I think उस वजह से कई बार आर्कियोलॉजी में हम वो एक स्टोरी लाइन क्रिएट नहीं कर पाए. कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि यू नेवर नो हाउ विल पीपल परसीव. लोग कैसे सोचेंगे अगर हमने आज ये बोल दिया ये चीज़ है. वी डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट and what will be the repercussions. What do you mean? Like, have there been some findings that could have literally shocked, like changed the way we've perceived history? It has. Like, I'll give you an example of the site that I have been associated with, Sonali. Right? The Chariots of Sonali. Now, there is a group of people who is not ready to accept that they are chariots. They think that it's cart. Right? Others who think that it's a chariot, but they want to take it to an extreme and link it कि ये तो महाभारत के chariot है. In fact, I remember जब हम लोग का press meet हुआ था site पे, and we prepared a press note. Very specifically, we included a line there saying that not linked to Mahabharat. Because हमने अभी excavate किया है ना, we are on the ground. Right. We like you can't just ask us a question because उसका answer नहीं होगा. But then next day, a news channels पे, a newspapers पे, it was like अर्जुन का रथ. So like उसके बाद then you never know how things go around, and people will take one thing and they'll just make it something, some ridiculous connotation. So you don't know that. We have to be very mellow in that respect. We have to like keep quiet at times. हमने कभी कम information देना होता है क्योंकि ज़्यादा देंगे तो समझ नहीं आएगा, या समझ आएगा तो चीज़ें will just blow out of proportion. Right. Yeah. So Sonali is a classical case. Like, people still ask me questions, and people still think that it's a cart, not a chariot. So only in academic ability or in academics where we can prove and disprove. It's very difficult. And also I would like to say that हमारे जो ancestors रहे हैं ना, previous archaeologists, very limited effort has been made by them to communicate with the people.
And that's why today, in the age of social media, it's very difficult for us to communicate openly because we are carrying that baggage. For instance, Harappans, right? अब लोगों को हरप्पन्स के बारे में अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी और मैं राखीगढ़ी के बारे में ज्ञान बांटूंगी तो वो मुश्किल रहेगा ना. तो हरप्पन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. No, I'm only saying this as a refresher because even when I was reading up on the Harappans on our good friend Wikipedia, तो मैंने ये चीज़ realize करी that they have 3 stages. There's the early Harappan stage, the middle stage, I assume, mature stage, and then the later stage, right? Yeah. और ये this was like a, can you also call it the Indus Valley Civilization or no? I mean, like, I personally don't like that term anymore. Yeah. I feel that in academia, we need to stop using it. Harappan Civilization, how far is actually the correct term? But of course, it's known worldwide as Indus Valley Civilization. Right. So, yeah, Harappans have 3 stages. You're absolutely right. Early, mature, and late. So, in this society, from what I gathered again, is because I was making a joke, you know, हम किसी गांव में गए थे, मैंने कहा ये देख हरप्पन नाला, and we all started laughing. It was sort of a reference to what I'd read in school, because we know you know, all the Roman cities, if you look at the decaying architecture, Colosseum है, वहाँ पे भी वो public baths वगैरह वाला system होता है. So a couple of like things spring out which are of like importance to everyone in India and abroad. कि यहाँ पे there used to be this ancient civilization. Number 1, drainage. Number 2, उसमें baths. And number 3, like I remember in reading in school, like a bunch of toys were found, fortified cities, all of that. So I think a good point to sort of get into the discussion about Rakhigarhi and Dholavira and then all of the other sites is to sort of re-explain rather कि Harappans का scene क्या है and why are they so important to archaeology. Harappan Civilization, it's one of the oldest civilization of the world, of ancient world. Right. But it's the biggest, largest in terms of the sheer size and expanse. It's spread from Makran coast in the west to, you know, the banks of Yamuna in the east to north, Jammu से लेके महाराष्ट्र तक. तो बीच में इतना बड़ा जो ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ये कल्चर स्प्रेड है. There are many cities, there are many rural settlements, semi-rural, there are many industrial setups. So there are different types of settlements also. In school, sadly, you know, I also remember in school we were only taught about the cities of Harappans. Right. You know, the big cities like Mohenjo-daro, Harappa. We were never told, you know, that there are also rural settlements like ग्रामीण इलाके भी हैं वहाँ पे. बड़े urban cities तो हैं but semi urban भी है, you know, और industrial setups भी हैं. तो जो पूरा आप, the way you look at Harappans na, it's very similar to what we look at India today. You know, the way our country runs, it has its own regional variations. You know, अपने लोकल वेरिएशंस हैं. हर 100 किलोमीटर में चीज़ें बदल जाती हैं. आपके खाने का टेस्ट बदलता है, आपका डायलेक्ट तो बदलता ही है, बट आपका रहन सहन बदलता है, आपका रिलीजियस जो अफिलिएशंस है वो भी बदल जाते हैं. हरप्पन्स का भी कुछ इस तरह ही है. हर थोड़ी दूर में, अगर आप एक स्टेट की भी अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस गुजरात की बात करें, तो गुजरात के जो हरप्पन जो कल्चर है वहाँ पे वो भी एक रीजनल एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है. देयर इज सोराठ हरप्पन, देन देयर इज धोलावीरा वाला कच्छ हरप्पन. इंडस में भी देयर इज, यू नो, द ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस जो कल्चर है, एंड देन यू हैव ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर और हाकरा विच इज़ द पार्ट ऑफ द सरस्वती रिवर सिस्टम, उसका अलग है. तो कहीं ना कहीं एक रीजनल वेरिएशन और रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हैं. हम क्योंकि एक ब्रॉडर व्यू में देखते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं दिल्ली से हूँ, कोई और कहीं और से है, हम लोगों का कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, बट हमारे पासपोर्ट पे या हमारे आधार कार्ड पे हमारा नेशनैलिटी इज इंडियन. इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, सो वेरिएशंस हैं, बट ऑन एन अम्ब्रेला देयर इज, we call them Harappans, right? There are certain things which bind Harappans together. For instance, their brick size. Brick size vary, but brick ratio binds them together.
टाउन प्लानिंग तो है ही, उसके अलावा हमारी जो स्क्रिप्ट, जो हरप्पन स्क्रिप्ट है, वो उनको एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर देती है. That is common across all rural areas and cities. Yes. So that's why we are able to connect it. जो स्क्रिप्ट हमें मिलती है सील्स या सीलिंग्स पे या पॉटशर्ड्स पे, धोलावीरा में एक साइन बोर्ड पे मिला है, तो जो स्क्रिप्ट के एविडेंस हमको मिलते हैं, we know that this. Have people been able to read and decipher what these mean? Unfortunately, people have tried. Their good hypotheses have come forward, but nothing is conclusive so far. क्योंकि और आसपास कोई ऐसी लैंग्वेज स्क्रिप्ट नहीं है जहाँ से आप इन्फर करके समझ जाओ. क्योंकि अगर हम ब्राह्मी और खरुष्टी की बात करें तो वो Sorry, what is that? ब्राह्मी और खरुष्टी जो अशोकन पीरियड में जो स्क्रिप्ट यूज हुई थी, वो जब डिसाइफर हुई थी तो जो जेम्स प्रिंसेप टुक सपोर्ट ऑफ संस्कृत, and then he went backwards because he was able to trace the whole evolution backwards. Sanskrit, Pali probably. हाँ. पीछे मतलब संस्कृत, प्राकृत, और पीछे मतलब he could go back. But ब्राह्मी के बाद और हरप्पन्स के बीच में there unfortunately still in terms of script there is a gap. So we are not able to trace that evolution in a certain way. That is one of the reasons why we are unable to decipher the script, Harappan script so far. क्या हरप्पन्स ने कभी सोचा होगा ऐसा कि वाह हमारे ऊपर इतना बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी बन जाएगा? What if they were just like regular people living their lives? Exactly, like I often wonder, like we excavate sites and हम उनके घर खोद रहे हैं, उनकी गलियां खोद रहे हैं, ना वंडर कि क्या उन लोगों ने सोचा होगा कि हम यहाँ पे ये चीज़ छोड़ के जाते हैं बिकॉज कुछ हजार साल बाद archaeologists will come and dig this. Right. But it's interesting, the way Harappan civilization has spread. All across the Indian subcontinent, especially across this whole huge area. It's very interesting, and how these few parameters that bind the culture together in a uniform or in the bracket of, in the umbrella of Harappans. But उसके नीचे अगर हम देखें तो कितने regional और local variations हमें मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, पॉटरी में देखने को मिलते हैं. काफ़ी चीज़ें हम इंटैंजिबल चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज इंटैंजिबल है, हमें सिर्फ टैंजिबल मटेरियल मिलता है. बट देयर मस्ट बी सो मैनी थिंग्स दैट वी मिस्ड आउट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जो एक्सकवेट कर रहे हैं वो कचरा ही है. What Harappans have left behind, it's garbage or refuse material, people who have not taken with them. So थोड़ी सी चीज़ से ही we have to build a whole universe. And who helps you in this? For example, let's say you're an archaeologist, so your primary way of doing your work is to dig up stuff and then infer karna ya to preserve it, whatever. Like, are there other people from other fields who are like, hey, iska matlab ye hai? Yeah, of course. We can't survive or we can't work till we have people from sciences. Till we have people from arts and other streams as well. Now, archaeology की अगर मैं बात करूँ, archaeology खुद में ही बहुत diverse है. Like for instance, I am a field archaeologist. I excavate. I have a specialization. But there will be others जिनका specialization होगा temple पे. या कई होगा जिनका होगा for instance Buddhism पे, उसके art पे. I think you mentioned on your Instagram something along the lines of one of your colleagues was doing an excavation of temples in Kashmir, something like that. Yeah. So people, they have their diverse interests and then they specialize on a particular stream or genre of archaeology. So we take help from them. They're all archaeologists, but we take help from them. Another thing is sciences. So botany है, zoology है, जियोलॉजी है, और भी स्ट्रीम्स हैं. फॉसिल्स मिलते हैं प्लांट्स के फिर बॉटनी. फॉसिल्स थोड़ा और पीछे चला गया टाइम पीरियड में. बट व्हाट वी गेट आर चार्ड ग्रेन्स. हाँ, जले हुए ग्रेन्स मिलते हैं, और तो उसको आर्कियोबॉटनी बोलते हैं. और पैलियोबॉटनी. एंड दिस इज बेसिकली जो आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से हमें ये एविडेंस मिलते हैं. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट एंड देन उसको एनालाइज करके हमें पता लगता है कि उनका मतलब कल्टिवेशन क्या था, वो खाते क्या थे. सिमिलरली आर्कियोलॉजी भी यही करता है बट एनिमल्स के साथ, कि एनिमल और मैन का रिलेशनशिप क्या था, व्हाट वर दे कंज्यूमिंग एंड व्हाट वाज द डोमेस्टिकेशन लाइक, वेदर दे वर वाइल्ड एनिमल्स विदिन, नॉट ओनली विदिन द साइट, बट वी आर ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द इंटायर द लैंडस्केप. Yeah, it's not only the site because we do get wild
variety also, both in botany as well as zoology. And then geology helps in the whole process of how landscape has changed. Right. Like Harappans के time पे climate कैसा रहा होगा, geomorphology कैसी रही होगी, what was the material, natural resources that they are using. So जब तक हम लोग collaboration नहीं करते हैं, we can't work. It sounds like a bunch of really passionate people. Really passionate. You can't survive in archaeology without passion. Why is that? Because कौन चाहेगा कि मतलब 49 डिग्रीज में चलो और एक्सप्लोर करो. 49 भी हो चुका है. अभी हुआ था recently. We were there at Rakhigarhi. It was damn hot. और heat wave. बट हम लोग कर रहे थे. हम लोग को 3:30 बजे निकल के जाना पड़ता था साइड पे. 3:30 दोपहर की जो पीक गर्मी होती है. Imagine this. And the worst part is that if you don't work, the locals that are working with you, they also become lazy, lethargic, and we don't blame them because it's hot. Yeah, but also उनके लिए significance की बात नहीं है ना. They're just going about their day. Yeah, so we have to. So 3:30-4 बजे निकलो और इतनी धूप है तब भी काम कर रहे हैं. बीमार हो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं. खाना नहीं खा जा रहा बिकॉज इतनी गर्मी है लेकिन तब भी काम कर रहे हैं. सो पैशन के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते यार. अदरवाइज यू पैक योर बैग्स एंड जस्ट गो. It's easy to do that, and I have seen people doing it. I don't blame them, but you can't survive without passion. Not for everyone. It's not for, trust me, it's not. Students come to me with so much of enthusiasm, and I've seen people giving up after few weeks. Of just field stuff? Of the field stuff, because it's not everyone's cup of tea. I get messages, like people keep telling me that I wanted to be an archaeologist, but I couldn't. One instance, one person, she said that, I wanted to be an archaeologist, but I love my comfort too much. So I'm not an archaeologist. So yeah, you have to give up your comfort. Tent में रह रहे हैं, हर जगह पे मिट्टी घुस चुकी है. You don't care. आपके कपड़े गंदे हैं, आप कितना ही धो लोगे, मिट्टी घुसेगी. एंड फिर you have snakes, and then you have scorpions, you have other things, so many things. You mean the cars or the stingers? Stingers. I bet मतलब फिर ये जो अर्बन लाइफ बड़ी ऐसी बोरिंग लगती होगी इन द सेंस कि लोग बोल रहे होंगे हाय यार आज गर्मी है, आज मेरा कुछ. Because I mean you can't just relate with that anymore, right? Like it's just it's the same with anyone who does work in extreme conditions. Yeah. It's like normal life looks very boring और लोगों की परेशानियां बड़ी अजीब लगती होंगी. Especially जब वो गर्मी के बारे में बोलते हैं ना. Seriously, because I remember I posted on Insta that surviving in 44 degrees. And I get a message that, even we are surviving. Like, but there are no coolers, no fan, no AC here. It's just पेड़. One पेड़. एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठ के हमने I think 1 महीना गुजारा है. And उसके बाद we got coolers and we got proper things. So it's very difficult यार. पेड़ के नीचे हम मतलब मेरे students जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, हम लोग बैठ के like we are just कि कब खत्म होगा excavation, because you reach that point, and I couldn't open my mouth and say हाँ यार मेरे को भी घर जाना है, because I have to keep motivating them as well. I bet you would be banned from sauna parlors just because you'd just be like ये क्या है temperature, just bring me more. That's crazy though. मतलब फिर भी एक पेड़ के नीचे that reminds me of like ancient times जहाँ पे like you're literally using nature to like fend off unbearable heat. Yeah, I mean, I don't like ACs anymore. मतलब I like it, but I can't. नहीं, you can. What I'm saying is that एक time के बाद ना you start enjoying things the way they are. Yeah. Like very simple life. Like, sitting under the tree. It's of course I'm romanticizing it here, but after a point, and once you're in field for 7-8 years, or people who have been in field for decades, it becomes part of your living. तुम्हें पता है कि कुछ टाइम बाद तो ये फिर से साइकिल रिपीट होना ही है. तो you are living constantly in two worlds. One is which is the archaeology world, the other one is the city life that you're living. And there comes a time where you don't battle. Like these two worlds don't battle with each other. You compartmentalize it, and they stay separate. Yeah, I'm just wondering because I think in modern life we've just limited our exposure to the outside world, to the elements जो बाहर होते हैं, to the point where लोग कहते हैं हाय यार मैं 5 मिनट गर्मी में आ गया, मेरे को गर्म सर्द हो गया है. That's one thing that they use often, right? But our ancestors didn't live like that at all. In fact, they only lived in caves when they had to go and sleep. Otherwise, they would just be out, right?
ठंड हो गर्मी हो just out. And I think like that's, I don't know, this is my hypothesis, something in us that is more primal gets activated when we're outdoors. If you live indoors too much, you sort of become, I don't know, lazy. And it's like there's a better state to be accessed. मतलब मैं भी भरी गर्मी के अंदर I just go on, like I went rock climbing in Mangar yesterday. And the rocks were so hot that if you sat on them, you could literally feel the burn. Yeah. But it was fun. Yeah. For like 8 to 9 hours, you felt like you were, like living a more human life than the one that you already live. Yeah, it's a very important point that you have made, that our ancestors basically they knew how to manage these things. Like गरम सर्द की बात जब आपने करी, हम जब साइट पे होते हैं ना, हम लोग को लोकल लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं और हम लोग को कुछ चीज़ें पता होती है हमें करना. फॉर इंस्टेंस गुड़, जैगरी. जैगरी इज पार्ट ऑफ अ डाइट व्हेन वी आर इन फील्ड. द रीजन इज हम इतनी धूल खाते हैं, हाँ, वो अननोइंगली धूल चली जाती है. जो लोगों का मुहावरा होता है ना, धूल चटा दी, ये लोग एक्चुअली खाते हैं एक्चुअली. तो जो इतनी धूल खाते हैं ना, जैगरी जब तक हम गुड़ नहीं खाएंगे ना, वो सिस्टम वो क्लेंस नहीं होता है. एंड इट्स अ मेथड, इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड गुड़ खाना. सो यूज्ड टू लाइक हैविंग अ माउथ फुल ऑफ जस्ट सैंड. कब वो चला जाता है, वो हवा से उड़ के चला जाएगा. यू एक्सकवेटिंग इन अ पिट्स, वो होता है. इन द एंड यू आर इनहेलिंग इट, राइट. सो गुड इज वन थिंग. एंड आई थिंक गर्म सर्द के लिए ना, जो लोकल्स होते हैं ना, लाइक हम जब अभी हरियाणा में जब राखीगढ़ी एक्सकवेट कर रहे थे, तो दे वर लाइक आप लोग कूलर अगर आपके पास है तो स्विच ऑफ द कूलर लाइक एक आधा घंटा पहले, बिकॉज इफ यू सडनली गो आउट यू विल गेट सनस्ट्रोक. Oh right, so acclimatize कर लो. Yes, another thing is कि don't get into the habit कि आप अपना गमछा या अपना handkerchief गीला करके you putting it on your head or trying to cool yourself down, because that's going to make things worse. Don't have bath and go in the sun, because this is going to affect your body in a certain way. Or have neebu pani. Right, just so basics. there are few things which the locals usually follow when they are in the field, when they are working in the when they are in the field, quite literally they tell us, and when we sort of get into the habit of using those methods in order to protect ourselves. So Disha, why isn't there digging all year round? ऐसा क्यों होता है? I was reading on your essays and articles as well कि someone from ASI has to commission कि अब हम ये एक खुदाई करने जा रहे हैं इस वाली साइट के ऊपर, तो वो होता है. Why doesn't it happen like अरे राखीगढ़ी है, पूरा साल है भाई, करते रहो? पूरा साल हम एक्सकवेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बारिश इज द ओनली इशू विद राखीगढ़ी. बारिंग द फील्ड सीजन स्टफ, आई एम जस्ट सेइंग व्हाई डू थिंग्स हैपन, से लाइक एक समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू से यस वी आर गोना डू दिस. द लाइसेंसिंग पार्ट, बिकॉज मॉनिटर करना पड़ता है. राखीगढ़ी या कोई भी साइट अगर सेंट्रली प्रोटेक्टेड है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही आपको परमिशन देगा, एंड देन दे विल ओनली टेल यू अ कमीशन यू टू गो एंड वर्क. एंड आई थिंक इट्स मनी. Okay. हम field season के बाद, for instance, now my field season is over. What we're working on is writing a report, because that's our primary objective. We have to write the report, and we have to write academic papers, because we need to tell the academia and the world that this is what we have discovered, this is what we have found. That takes time. That takes more time than actual time of excavation. क्योंकि आप dig तो कर लेते हो, और उसका you have to make sense, you have to write it. One of the few academics with skin in the game, actually. Yeah, so it takes time. उसके लिए you need money also. You need money for dating your samples. जो carbon dating, I'm sure people would know this. तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए. I don't know this. What do you mean? Carbon dating is when you date samples, और C14 का जो half life है उससे date करते हैं कि last when the particular sample was exposed, and when हम उसमें कितना C14 है अभी मौजूदा. तो कार्बन डेटिंग होता है, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सैंपल में. तो वो बैक ट्रैक उस साइकिल को कैलकुलेट करके बताते हैं कि इतना पुराना ये सैंपल होगा, बेस्ड ऑन द कार्बन अमाउंट इन इट. कार्बन अमाउंट C14, जो रेडियो एक्टिव C14 है उसको देख के तो उसको छू सकते हैं. if you touch it, is it? we don't touch it because contamination होता है. So we always take samples very carefully and we wrap it in aluminum foils. तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए. इंडिया में बहुत रिसेंटली तक, कुछ 5-6 साल तक इतने लैब्स नहीं थे.
कि एक्सकवेट करके सैम्पल्स जाए. PIL या फ्यू लैब्स, ट्रेडिशनल लैब्स वर देयर, बट देन एक टाइम के बाद ना टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाता है कि उसको अपडेट करने के लिए भी पैसा चाहिए. सो वी यूजली सेंड अब्रॉड, राइट. तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए या हमें कोलैबोरेशन चाहिए. तो वी डू नीड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू कमीशन द प्रोजेक्ट, otherwise it becomes very difficult. Or another thing is we need money as well, right? We need money to survive even our city lives. We need money so we stay motivated and keep doing our research, right? So us sab ke liye we do need an organizational backing or support. On that note, on the side you're an archaeology consultant, right? How does that even work out? Like kya hey mere garden ke andar ye ek kuch mila hai, what do you mean? Is it from the XYZ period? Like Yeah, we do that also. Like a lot of people keep. But who consults an archaeologist is my real question. Like who consults, and a lot of people do. Yeah, a lot of people do. They people, especially who collect antiquities, they do. Okay. People, private people don't. Like private sector में और local individual level में people don't. But we do have organizations who take your help. For instance, I'm doing work for ASI. It's that work only that I'm doing. I'm consulting on Rakhigarhi project or this project, that project. I take care of the excavation, then it's my job, and I have a team. We write a report and we submit. And then उसके आगे क्या करना है वो सब करना है. So वो सारा काम we do it. But private level पे अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं. But I do still get people who wants to know ये coin कितना पुराना है. They want to know if somebody collects antiquities, they want to know. So थोड़ा बहुत उतना ही है, but mostly it's with the big organizations that. What's the coolest thing you've discovered on the site? And you can go like full nerdy कि मतलब वो painted graveware का वो वाला था, उसमें वो beads थे. Yeah. Coolest thing. That you yourself have like unearthed and. There's so many things. Like recently I'm just going gaga over the street that we have. Unearthed at Rakhigarhi and the bricks. A street, पूरी एक गली निकाल ली. गली है. तो मतलब, so sorry to help me understand this. All of these sites are hidden underground. ये सारे शहर थे या ये जगहें थी जो अंदर थी, including Mohenjo-daro and Harappa. They were buried. Underground नहीं थे, वो bury हो गए. Over time. Over the period of time. That's why वो mound बन जाता है. अच्छा. उसके ऊपर वो accumulation होता रहता है एंड वो जैसे साइट होती है वैसे ही माउंट का कंटूर बन जाता है. तो इससे लोग encourage ना हो कि random टीले खोदने शुरू कर दें because they won't find anything. Yeah, you won't find anything unless and until you have an archaeologist. You literally won't find anything. Because क्या होता है ना, mostly north में जितने structures हैं वो mud brick से बने हैं. मड ब्रिक मतलब सन बेक्ड ब्रिक्स, जैसे उपले से बनाते हैं. कच्ची मिट्टी के जो घर बनते थे वो कच्ची मिट्टी की ईंटें जो मतलब दे बेक इट under the sun for a long period of time and then they use it. Right. And they are as hard as a baked brick only. Correct. But the thing is वो पानी से ख़राब हो सकते हैं. तो वो जो हम bricks expose करते हैं ना, imagine हम मिट्टी से मिट्टी को expose कर रहे हैं, you know? So आप अगर खोदेंगे भी आपको समझ नहीं आएगा. It takes time for you to recognize what you're excavating. Right. So at Rakhigarhi, when we got the street, like the evidence of the street, पहले तो पता नहीं था कि like we were still thinking कि street ही है. We had so many questions before we made public. But then one fine day I was in one of the trenches and I was discussing with a researcher who was working with us. I was talking to her and I just put my trowel like this and I just did this and a chunk came out. उसके पीछे there were bricks. And there you go. Then we had this huge mud brick wall, which became a very important discovery at Rakhigarhi because it sort of suggested that there were mud brick complexes. दो कॉम्प्लेक्स के बीच में ऐसे स्ट्रीट रन करके राइट एंगल पे टर्न कर रही है. समथिंग दैट यू वुड रीड इन स्कूल बुक्स. मोहनजोदारो की बात अगर करें, स्ट्रीट्स राइट एंगल पे टर्न कर रही हैं और दिस इज हाउ द कट्स हैव हैपेंड टेकन प्लेस इन द टाउन प्लानिंग. समथिंग दैट आई ओनली रेड, समथिंग दैट आई न्यू एग्जिस्ट्स, बट for the first time excavating something like that was really amazing. Yeah. One thing that I was reading about Harappa in researching for this conversation was कि वहाँ पे I guess in all the sites they didn't discover like a central place that dictated कि यहाँ पे कोई ruler था. We can't suggest that अभी तक.
हाँ. कि रूलर था. वी नो कि कोई ना कोई सोसाइटी वॉज स्ट्रैटिफाइड. उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमारी आपकी सोसाइटी या पहले सोसाइटी थी स्ट्रैटिफाइड, वैसे नहीं, बट प्रोफेशन के बेस पे तो डिवीज़न था. यू नो कि हमें ये तो पता है कि कुम्हार थे, पीपल हु वर इन्वॉल्व इन योर कॉपर ऑब्जेक्ट मेकिंग, पीपल हु वर मेकिंग थिंग्स यू नो फ्रॉम शेल एक्सेट्रा. सो वी न्यू दैट ट्रेडर्स थे, इम्पोर्टर्स, रिटेलर्स थे, फार्मर्स थे. उस बेसिस पे सोसाइटी वॉज सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड on that basis. Also, you know, we have an example is Dholavira, Mohenjo-daro, Harappa, where you have citadel, we have middle town, you have lower town, which suggests that yes, there's some sort of, you know, hierarchy is there, some sort. We can't pinpoint exactly, but there is some sort of hierarchy, because otherwise why would you have citadel? Of course, Citadel is what? बड़ा सा structure होता है. Yeah, citadel is actually the term taken by the European archaeologists excavating the site way back in 1920-30s, because they were excavating Roman sites also. So they've taken that very concept and used in the Harappan context. But basically in Harappan context, citadel is where sort of structures are little bit on an elevated area. Right, so that they can oversee the city. They can little elevated area, and in case of Dholavira, it's also fortified. So it has its own छोटा सा enclosure. So we know that इस तरह का hierarchy होगा ही. कुछ stratification तो रहा ही है. राजा का हम नहीं बोल सकते हैं, because उसको बताने के लिए we need a lot of evidence which we don't have right now. Like treasure की chest, for example. I mean, like, we don't know. We are not able to decipher a script. We don't know, you know, whether there was, like, in case of like Egyptians में जैसे था, there were pharaohs and there were kings. वैसा system है नहीं. We don't know, because जो हमें barrels भी मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा population के ही मिलते हैं. ऐसा कुछ है नहीं कि ये राजा का है तो ये tomb है, ये राजा का ही रहेगा, like pyramids, you know. We don't get like that. So I don't think कि इतना हमारे पास एविडेंस है कि वी कैन मेक दैट assumption, but of course there was some sort of hierarchy. Yeah, I also noticed again on our good friend Wikipedia that किसी एक city, I forget which one, I think Dholavira, Rakhigarhi के बाहर, outside the walls, there were skeletons that were not as fit, for the lack of a better word. Oh, sorry, that had wounds. If you look at some of the skeletons, all the ones outside the city walls had wounds, which signify some kind of, और उसके अंदर tuberculosis भी था, क्या था. They were outside the southeast of the city. So I was just wondering कि ये जो stratification, the thing that you're talking about, the way society is divided, it's clear that some people were like left off. Yeah, but I think that is just you know, somebody must have written it who supports the invasion theory. Of course there was people who were outside the city walls. You know, fortification के बाहर भी settlements हैं और वहाँ भी लोग रहे हैं. बट हरप्पन्स के बैरियल्स की अगर आप बात करो और हरप्पन की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की भी बात करो, देखिए हरप्पन्स तो हैं ही, हरप्पन्स के अलावा भी लोग रह रहे हैं विच आर नॉन हरप्पन्स. राइट. सो हरप्पन्स के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी है, जिसका एग्जाम्पल एक सनौली है, या यू नो यू हैव डेक्कन चालकोलिथिक सोसाइटीज़, यू हैव सो मेनी अदर पीपल लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज हरप्पन्स. जो हम बरियल्स की बात करते हैं, जो लास्ट राइट्स की बात करते हैं, दे वर वेरी सिस्टमैटिक. अगर कोई बैटल में भी मरा होगा या किसी डिजीज से भी मरा होगा, उसको वो शिद्दत से अच्छे से दफन करेंगे. So there are no cremations, they were just buried. Cremation भी करेंगे तो pot में they will put the ashes and bury it. So you've discovered like... Yeah, there are different types of burials that we find. One is where the skeleton is extended burial, where the whole skeleton is. The one where there is no skeleton because probably the person must have died somewhere else, but they have done the symbolic burial. They have buried some things which are important or which represent that person who has died. And so this is, you've got the site, and then further down you've also found like a burial site. Burials are always separate. So burials are outside the city, like little bit away from the city. Okay. Harappan जो burials हैं, they are little like 500 मीटर या 400 मीटर थोड़ा दूर होंगे सिटी से, लेकिन उनका एक burial ground होगा जहाँ वहाँ वो bury करेंगे. You know, एक ही जगह पे एक सिमेट्री जैसा होगा, बरियल ग्राउंड एक अलग से होगा. तो वो हरप्पन्स और बाकी चालकोलिथिक सोसाइटी के भी, चालकोलिथिक मतलब कॉपर यूजिंग, तो हरप्पन्स फॉर ब्रॉन्ज एज यूजर्स. राइट.
Copper was also used, but they were basically Bronze Age users. The non-Bronze Age users are the Chalcolithic people, which are contemporary to Harappans. कुछ is there like a superiority कि ब्रॉन्ज वाले ज़्यादा बढ़िया हैं या कॉपर वाले? I don't think so. अच्छा. Of course, bronze, देखिए ब्रॉन्ज बनाई इसलिए बिकॉज कॉपर बहुत जल्दी ख़राब ना हो इसलिए उसमें टिन डाला जाता है, सो दैट इट्स वी एबल टू फैशन ऑब्जेक्ट्स, बेटर ऑब्जेक्ट्स, और वो हार्ड रहे और ख़राब ना हो. बट ऐसा कुछ है नहीं कि वो ज़्यादा सुपीरियर है या इन्फीरियर है. हाँ, ये हमें पता है कि चालकुलिथिक जो सोसाइटी थी, दे वर नॉट एज अर्बन एज हरप्पन्स. Okay. They were more rural. They were more into agricultural-based economy, pastoral agriculture-based economy. But Harappans' ka economy was mix of everything. They were traders, they were agriculturists, everything. Yeah. Yeah. What do you think caused them to be that urban? I think एक तो strategic location. दिल्ली के आसपास? नहीं, जो पूरा civilization का जो पूरा location है. Especially if you look at the Indus Valley and you look at the Saraswati Basin or you look at the Kutch, वहाँ से trade करना easy है, Right. It's a trade route for sure. You can trade it. Exactly. So trade route is very important, which caused them to become urban, like fuse centers to become urban. Look at Dholavira. Why do you have a site on Khadar Island in Kutch, run of Kutch? Which becomes an island when जहाँ जब पानी sea level ऊपर होता है, becomes an island. Why? Why would you have a city there? Because वहीं से थोड़ा दूर अगर आप धोलावीरा कभी जाओ तो कराची is not that far. Right. You can walk. When there is no water in the run, you can walk. So trade is very important. It's on the trade route. Right? Look at Mohenjo-daro and Harappa also. Look at Kalibanga. Kalibanga is one of the biggest cities. Where is it located? It's located in Rajasthan, in Ghaggar Akra Basin, and Hanumangarh. And Kalibanga भी वहाँ का एक बड़ा center है. तो मतलब ऐसा लगता है कि जगह जगह पे there are big centers and then there are small centers. There could be one center might be controlling the whole. We don't know that yet. Look at Rakhigarhi. It's on the trade route. आज भी वो ट्रेड रूट ही है. तो ट्रेड हैज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इकोनॉमी जो फ्रॉम अर्ली हरप्पन्स में जब वो फार्मर्स या ट्रेडिशनली सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से स्लोली ग्रेजुअली एवोल्यूशन हुआ इनटू मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, एंड इन प्रोड्यूसर्स. तो उस सब में जब वो चेंज हुआ तो ट्रेड हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनसे जब उनके ट्रेड लिंक और बढ़ गए तो द नीड, जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो बैलेंस जो था ना, यहाँ पे आपको, वहाँ पे नीड है तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है. राइट. यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वहाँ पे नीड कैसे होगी? वहाँ पे भी आप कॉलोनीज बसा रहे हो क्योंकि आपको यहाँ से ट्रेड लेके आपको छोटे छोटे मैट्रिक्स से आप जा रहा है सामान. एक साथ एक जना लेके नहीं जाएगा. धोलावीरा से सामान नहीं जा रहा है, धोलावीरा से एक दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से कहीं और जाएगा. तो वो पूरा जो मैट्रिक्स है, that has caused Harappans to become what they literally became during 2600 BCE. That's a long time ago. I'm not even sure ki about 5,000 years ago. If boats were the case, right? Otherwise you would see something in the southern part of India. Boats are there. Acha, boats. I mean, like sort of traveling across the world and using boats. वैसे नहीं था, लेकिन they did travel far and wide. Like उनके हिसाब से वो नहीं तो उनका सामान तो गया ही है. फॉर इंस्टेंस जो खंबात में बीड्स बन रहे हैं, कार्नेलियन बीड्स, आज भी खंबात क्या है? गुजरात में एक जगह है खंबात, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर लैपिडरी इन एशिया. Okay. I don't know what lapidary is either. Lapidary is basically where semi precious stones से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. Okay. ठीक है, तो मतलब कार्नेलियन है, लैपिस लजुली है या एगेट है, जो भी सेमी प्रेशियस स्टोन से ऑब्जेक्ट बनता है, बीड्स या ज्वेलरी है, व्हाटएवर, वो सब खंबात में बनता था. हरप्पन्स के बीड्स भी वहीं से बनते थे या वहाँ से क्योंकि गुजरात में रिजर्व है, रिसोर्स वहीं है एगेट और कार्नेलियन का, तो वहीं से वो और जगह जाया जाता था. तो आज भी वहाँ बनता है. तो पहले भी जो वो बीड्स हैं वहाँ से through channels they must be going in different places.
लोथल पास में है, लोथल के थ्रू डॉकयार्ड के थ्रू दे वुड गो ऑन बोट्स places to Egypt, Mesopotamia and whatnot, and we find evidence in the Mesopotamian cities of existence of those Harappan objects being there. Harappan objects have been found in Mesopotamian cities. Yes, but then we don't find their objects here. Acha. They probably were like, archaeologists dig na kare, maybe there's something else we don't know. Maybe the Harappans didn't need anything. Quite possible, right? Maybe they were self-sustaining. We don't know. Maybe they were getting things which are perishable. Yeah, you also have to see that India has generally been a very fertile place, right? Even wood is going from here, अच्छा, उनके अपने पेड़ भी नहीं है मेसोपोटामिया में. वहाँ यहाँ से wood भी जा रहा है. We have evidence, यहाँ से wood भी जा रहा है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं. But अभी I think we need to it's very interesting to think, and people keep telling me, इजिप्ट में कितना अच्छा आर्ट मिलता है यार, इजिप्ट का पिरामिड है, इजिप्ट मेसोपोटामिया ये है, हरप्पन्स के पास क्यों नहीं था. अब मेरे को ये भी जानना है कि आर्ट कब आता है. When does art begin? When you have somebody commissioning you to create that art. Right. Otherwise, artist is not going to survive, empty stomach. पुराना patrons और artist वाला system तो बहुत सालों से चलता ही आ रहा है. बहुत सालों से आज भी चल रहा है. Right? आपको patrons चाहिए. Another thing is when you are self-sufficient or you have enough space to create art of that extent. Like the one you find in Egypt and Mesopotamia. यहाँ पे when you are traders, you are agriculturists, you are producers, manufacturers, you are excelling in those trades. Maybe you don't have utna space for art, or maybe art is only on commission based. Yeah. We don't know that yet. So I don't like when people keep comparing, Egypt and India. Yeah. I mean, I think we should start looking at it from a different perspective. Yeah, I also think about the fact that if these are fortified walled cities, or 5,000 साल पहले, you can imagine all of this land being one big jungle, right? Imagine कर सकते हैं for the sake of just following this along. The time and patience to sit and बैठ के अब मैं pot बना रहा हूँ या मैं कोई वो बना रहा हूँ presupposes that you feel secure. Right? That there are not wild animals out there to hunt you or kill you. Exactly. Right? Even like I was reading, all the toys that have been found are all of domestic animals. Yes. Yes. Like they didn't find a toy of a tiger, for example. Or they, oh my God, hypothesis is destroyed. The point is still mostly maximum domestic animals, right? Yeah. Which serves to prove कि आप एक society के अंदर इतने comfortable हो कि आप you can do those things. You can pursue art 5,000 years ago. Yeah. Like who could think of that? Yes. कि 5,000 साल पहले, because you imagine एक expanse है, your cavemen like people fighting for survival, कुछ भी तुम्हें खा सकता है, मार सकता है, mortality rates are through the roof, and then you've got these cities where people are like building pots, building beads, building all the cool things that you study. It's crazy. Yeah. Art, exactly, with potters also, आज भी अगर आप potters को study करो ना, उनका society और उनका जो रहन सहन है and how they function, अभी COVID के बाद, like I did a bit of survey after COVID, and I surveyed few potters in Rajasthan for my work, and I've seen that most of the potters have left their art because they were unable to survive. बिकॉज कोविड में इतना उनका जो डिमांड था ना वो एकदम कम हो गया था एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट. अनदर थिंग वाज कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर नॉट टेकिंग अप pottery. They are not taking that up. All of these traditions have an apprentice culture, right? Yes. So, but on the other hand, we know that a potter, जो कुम्हार जो community है, एक distinct community है, they function on the basis of demand and supply. अगर आपको घड़ा चाहिए तो वो घड़ा ही बनाएंगे. अगर एक पर्टिकुलर शेप का डिमांड बढ़ गया तो वो ही बनाएंगे. आर्ट कहाँ आएगा? पेंटिंग में. और पता है कौन करता है? मैक्सिमम वी डिड अ सर्वे एंड आई एम स्टिल कंडक्टिंग दैट स्टडी. पेंटिंग इज डन बाय विमेन. या विमेन एंड स्मॉल गर्ल्स, लाइक टीनेज गर्ल्स जो घर पे होती हैं. क्यों? क्योंकि पॉटर जो है वो हैवी ड्यूटी काम कर रहा है. मेल पॉटर वो चक्का चला रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चक्के नहीं है तो वो चक्का चला रहा है, वो मिट्टी से बना रहा है, वो पॉट फिर रख रहा है. लेकिन जो पेंटिंग का काम है, जो डेलिकेट काम है, वो औरतें कर रही हैं आज भी.
आज भी पॉटर्स के घर में जो उनके घर में जो औरतें हैं वो मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों करते हो, यू नो, आस्क्ड मेनी पीपल, दे आर लाइक कि बैठ जाते हैं, फ्री होते हैं तो कर लेते हैं. मैंने आस्क्ड मम्मी पापा डिज़ाइन क्या बनाते हो, दे आर लाइक कि मेरी सास को उसकी सास ने सिखाया था, देन शी टॉट मी दीज पैटर्न्स, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट आई बीन टॉट. कभी कभी मूड होता तो कुछ और पैटर्न बना देती हूँ. सो यू गेटिंग अ पॉइंट. सो दीज present society gives us a lot of clues, especially Right. how human psychology works, how our society works, and somewhere or the other this could have been the case. We don't know, we can only assume. Yeah. Which is why it's fun, right? You can do all the hard digging and everyone else can just lose their minds. हो सकता है यार इसका मतलब ये हो. Because it's cool, right? Like it's no matter how hard you try, I'm sure कोई ना कोई archaeologist जाके बोलोगा यार, like even I'm sure you must also get you're susceptible to having flights of fancy कि इसका मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है. Like how hard is it to be objective about your findings when your imagination is just bursting through? Initially it used to be really hard, because you would find even the smallest of antiquity and you will be like, oh my god, ये हो सकता है, ये ऐसे होगा. But then when you keep working in field, एक time के बाद you feel like कि नहीं, you have to control your mind. Right. You have to first document. ये अगर प्रॉपर बीड है तो ये बीड कहाँ मिला है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मटेरियल क्या है, ये कैसे बना होगा, पहले ये जान लो, फिर we'll assume और imagine कि ये बीड का हार कितना सुंदर रहा होगा. तो एक टाइम के बाद you get into that exercise and you learn to become objective. Yeah. What tools do you use to analyze something like a pot or कुछ और that you found at a site? For one that, second, what is a sherd? So sherd is a broken pot. Like अगर आप घड़े को तोड़ दो तो उसके जो टुकड़े हैं वो शर्ड है. Some shard बोलते हैं इंग्लिश में शार्ड बोलते हैं, हम शर्ड बोलते हैं ना. SHARD भी स्पेलिंग है, SHERD भी है. सो बेसिकली इज नथिंग बट ब्रोकन पॉट. ठीक है, तो हम लोग को वो छोटे टुकड़े मिलते हैं. बहुत रेयरली बड़े पॉट या फुल पॉट मिलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है. यूजली वी गेट दोज ब्रोकन पॉट्स. इमेजिन फ्रॉम द ब्रोकन पॉट वी हैव टू नाउ write the whole story. ये पॉट, ये छोटा जो पॉट है, ये बना, इसकी बनावट कैसी होगी, मतलब कुम्हार की टेक्निक कैसे होगी, मतलब किल में ये अच्छे से पका होगा या कच्चा रहा होगा. पकाने से पहले उसको उसने बीट किया है अपने टूल्स से, क्योंकि टूल्स के मार्क्स दिखेंगे, या चक्के पे फास्ट व्हील पे चलाया है या स्मॉल व्हील पे चलाया है. फिर उसके बाद उस पर पेंटिंग करा है फायरिंग के बाद या फायरिंग से पहले. कलर जो यूज़ किया पेंटिंग का वो क्या होगा. एक छोटे से शर्ट से वी हैव टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग आउट द होल स्टोरी, द होल हिस्ट्री. वो जो लाइक वी टेक द एंड ऑफ द रोप एंड वी हैव टू लाइक गो टू द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन इट वाज मेड. सो पॉटरी में और काफ़ी चीज़ों में हम यही करते हैं. लाइक बीड भी, एक बीड है तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, गुजरात से आया है, कहाँ से आया है, या इंडिया के बाहर से आया है, वहाँ से यहाँ रॉ मटेरियल आया है कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आया है, फिर यहाँ पे आके उस बीट को परफोरेट कैसे किया है. ये एक्सट्रैपोलेशन है या कुछ मेथड है इसको करने का? मेथड है. वी हैव आवर ओन पैरामीटर्स टू डू इट. Yeah, like a process of elimination probably. Exactly. So wear and variety, and by looking at things, You use microscopes also? Yes, so looking at microscopes. Abhi with pottery studies we have gone far and we have started using sciences where we also extract lipid. जैसे लिपिड प्रोफाइल. हाँ, तो लिपिड उसमें से हम निकाल सकते हैं फ्रॉम पॉटरी, और उसको हम स्टडी करके ये बता सकते हैं कि व्हाट वाज stored in that pot, or what if something was cooked in that pot. Recently a study had happened at one of the Harappan, छोटी साइट है कोटलाबल्ली गुजरात में. वहाँ पे एक पॉटरी का जब ये रेजिड्यू एनालिसिस किया तो दे फाउंड आउट दैट चीज़ वर मेड. चीज़, प्रोटीन के एविडेंस मिले एंड चीज़ के, पनीर possibly, the cottage cheese, national pastime paneer. So so this is how now we are trying to use more help of more science into archaeology, trying to understand and go beyond just the traditional method of analyzing things, so we get more information, so we collect samples accordingly on site. How hard is it to explain your job to someone? Very hard.
people compare you straight away with Indiana Jones. है ना, वो वाली मैंने गलती अनिका के साथ कर ली थी, because I was like, because you also need an in, right? As a layman, you're like, what is the first thing I can say? You can have your coffee, by the way. You've been going on. I was like, what is the first thing that I can sort of make a comparison to? And like, you think about Lara Croft, Indiana Jones, and you do that. But it isn't like you're fighting off mummies and like doing it all alone. Because I think what is common in both Lara Croft and Indiana Jones is they're both like individual rebellious agents. You know, they don't work in tandem with so many people. Or वहाँ पे, or in your life, you're not being attacked by demons or like monsters that you can't see. No. Have you been attacked by animals or like snakes or? Snakes, yeah. Snakes? Monitor lizard. Monitor lizard as well? Yeah, I've not been attacked, but I found a monitor lizard under my bed. What? कहाँ पे? I was excavating a site in Uttar Pradesh, Barnawa. और वहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर लिजर्ड्स थे, स्नेक्स भी थे, Hate monitor lizards. स्नेक्स भी थे, बट और हमें पता है कि अप्रैल जैसे शुरू हुआ एंड मार्च एंड अप्रैल सांप अब आएंगे एंड वी विल बी बी अ न्यूसेंस एंड वी स्टे प्रिपेयर्ड, लाइक हम छोटी छोटी चीज़ें, वी डोंट लीव आवर शूज on the ground, we keep it on the high elevated area, blah blah blah, all that. So one day after the first half, after lunch, I enter my tent and I'm just taking off shoes and I'm just look niche, and usually I don't keep anything under my bed because snakes and all, okay, and I see something is there. And वो थोड़ा camouflage हो रही थी, but I could see. Then I just wore my glasses and I saw a big monitor lizard under my bed, and I ran out. Next day I was in a room. The tent was taken off because they were like, we can't take risk because so thankfully they're not venomous and they don't attack humans. Yeah, they don't, but then you get scared. It's huge, yeah. हाँ बहुत भयंकर, बहुत बड़ी होती है. Yeah, and I've seen how they walk, like. I don't know why I always talk about monitor lizards on this podcast, but just I hate them with a passion. Why? Because if you go to Wikipedia, it says least concern. Extinction के अंदर least concern because there's just so many of them. There's so many. And you're right. There's just something like snakes less. Komodo dragons तो यहाँ है नहीं, otherwise you'd be like scared shitless. But monitor lizards 100%. The way they walk is so prehistoric. It just वो जो एक पीछे जैसे ऐसा नहीं होता कि रूह कांप जाती है. It's I think that prehistoric instinct also gets activated in us because our ancestors were used to seeing all these like reptiles walking around. They just look like mutated dinosaurs, like they do, like it's so scary to just look at them, like. And I still remember that very day very clearly. But snakes, you know that you're going to find snakes. Yeah, पेड़ से भी गिर जाते हैं. सेक्शन के अंदर बैठे होंगे, खुदाई करने, hidden underground, क्योंकि they go नीचे ना. हम तो उनके घर में basically excavate कर रहे हैं ना. हम उनका घर हो गया ना अब तो. हमारा कोई हक नहीं है. वो उनका घर है, वो बिल बनाएंगे तो रहेंगे. But मतलब when you are digging, for example, there are no holes to get in, like there's no snake pit to get in literally, and you find them like feet underground. मतलब मिल जाते हैं, they make their pits and वो ऊपर से cover हो जाता है बाद में, या वो कोने कोने में होता है. But we do find वो build. Have you come face to face with a snake like that? Once. Yeah, once I remember in Rajasthan I was excavating a site and सुबह like मेरे साथ जो काम कर रहे थे locals, they were like, यहाँ मैडम यहाँ से अभी snake गया है. I said अच्छा ठीक है. Then I went in my trench. It was about 2.5 meter deep. And एकदम से somebody is like, they're like, मैम यहाँ snake है. ऐसा नहीं है, आप मजाक करो, because every day they'll make fun or they'll just scare me for no reason, I was like, you're just joking. It's like, नहीं यहाँ है, देखिए. And I went close and I could see the eyes and I remember running. Yeah. वो भी सीढ़ी ladder से चढ़ के. Did you see what kind of snake it was? Yeah, then what the locals did, they pushed the section, took it out, put it in a bag and कहीं जाके छोड़ के आए. They don't kill the snakes. अच्छा. Because अगर हम उसको रख देते वहाँ तो कभी ना कभी हम लोग को problem हो जाती. Yeah, but like you said that 2-2.5 meter की trench थी. How do you get down? सीढ़ी से. अच्छा, like you proper जैसे वो मिस्त्री या construction worker जो वो लकड़ी की सीढ़ी लगाती हैं, you use that? Yeah. I have excavated a trench which was about 15 to 16 meters deep.
Oh my god. Like I can't even do the feet I mathematics. also can't. It's just meters 15 to 16. तो कितनी लंबी सीढ़ी थी? 3-4 सीढ़ियाँ लगानी पड़ती अलग अलग जोड़ के? नहीं, एक जैसे एक जगह से यहाँ से गए, हाँ, फिर थोड़ा सा रास्ता बना दिया. हाँ. Oh my god, that's crazy. राखीगढ़ी वो 7 meters deep. अच्छा, तो अगर किसी की कोई दुश्मनी हो आर्कियोलॉजिस्ट से, वो तो ऊपर आ जाएगा, धक्का दे देगा. इसलिए मैं बैठ जाती हूँ. Because when you're supervising you make enemies, right? You're always shouting. You never know किसका दिमाग खराब हुआ और वो ऐसे धक्का मारे. कितनी बढ़िया बॉलीवुड पिक्चरें बन सकती हैं इसके ऊपर. Yeah. That's crazy. But like, how many people do typically work on like an excavation? How many people? It depends on what's the scale of your excavation. अगर आप बड़ा project है, then you have students, then you have other supervisors, and then you have the locals which we hire. Usually you need about 50 to 60 people if you are taking up about 2 to 3 trenches. वो मैं बोल रही हूँ 30 मीटर बाय 30 मीटर का अगर एरिया एक्सकवेट कर रहे हो, बिकॉज यू नीड पीपल हु विल क्लीन द ट्रेंचेस, यू नीड पीपल हु विल बी डूइंग सीविंग, मतलब छानेंगे मिट्टी को, बिकॉज यू गेट स्मॉल एंटिक्विटीज विच वी कांट पिक फ्रॉम द नेकेड आई. You need people for other things also, so you need at least 50 people minimum. Do you play music at the site? No, like little military system goes on at site. अच्छा. Yeah. I was just like motivation, morale के लिए. No, You know, like Rocky Balboa. No, like कभी नहीं. On camp we do, like camp के अंदर हम करते हैं, but sites पे you have to like just you and your mind and you know, it's just me usually shouting and you know other people are there, just they're working and others you are have to talking. shout. Yeah, from one side to the other, if you have to tell somebody, it's difficult to walk all the time. अच्छा, तो use a megaphone or just use your voice? My voice. That's crazy. Yeah. Well, I'm glad that you shout only like some months of the year, because otherwise you just lose your vocal cords, no? Yeah, I get used to it, yeah. After a point. The worst is when you're not well and you have to still explain to them, and then, you know, initially I was not well like this season for a while. And I was unable to speak properly, but then you have to manage. अच्छा, वहीं से बैठे बैठे आर्कियोलॉजिकल फंडिंग भी बतानी होती है कि ये पीरियड का है, ये वो सब बताना होता है चिल्ला के. नहीं, कभी कभी you know क्या होता है, when you are dealing with students ना, you have to keep them motivated. Okay, when because कोई mostly हमारे साथ जब students आते हैं उनका पहला excavation होता है, और इतना लंबा फील्ड में एक्सकवेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इतना लाइक यूनिवर्सिटीज़ 15 या 1 महीने से ज़्यादा एक्सकवेट नहीं करते हैं. तो यू नो यू नीड टू बी देयर टू गाइड देम. सो उस समय यू हैव टू लाइक बी देयर ऑल द टाइम, you know, supervising or telling them things and explaining them and you know giving them a headway and guiding them through. Yeah. India का like in terms of just the like, for the lack of a better word, like rankings or status in दुनिया भर की archaeology के अंदर, like what is India's significance? What does it contribute to the global conversation around archaeology? See, South Asia का अगर मैं significance दूँ तो without, I mean like you can't talk about ancient world without talking about South Asia. Okay. You know? Because it's not all Rome and Egypt. रोम तो बहुत बाद में आया है. इट्स नॉट अबाउट इजिप्ट और मेसोपोटामिया और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, आप उनके बारे में बात करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट साउथ एशिया. यू हैव टू टॉक अबाउट द इंडस, यू हैव टू टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडस सोसाइटीज़, बिकॉज यू सी द मास प्रोडक्शन दैट वाज हैपनिंग, you know, in Indus civilization, the things that they were producing and then they were exporting. And you see the reason why you have so many cities coming up na, because the trade is happening, the economy is growing. Without that I don't think you can construct Bronze Age civilization. And I think we have been overshadowed within our home ground by Egyptians and Mesopotamians so much that we as Indians don't give our own civilization the due credit. And I talk about the South Asian civilization because India though, you know, political boundary to upset hai, but it goes beyond just the political boundary of India. The whole South Asia together. Look at Afghanistan. So much of raw material comes from Afghanistan. Art,
So many things. Look at Pakistan. Pakistan is part of the whole, Indian subcontinent also. So it's part of the major trade route. You can't connect Asia, Southeast Asia, without going through or connecting South Asia. I think it's because Egypt just looks cool. There's pharaohs and mummies and tombs and actual treasures at some point. I mean, like, it's a very important thing to understand that क्यों वहाँ पे pyramids हैं. Because they could build pyramids. ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते या pyramids के लिए हमारे पास यहाँ पे material नहीं है. ऐसा नहीं है. It's just how their rituals, their society and the culture has developed. They have that hierarchy. They need to commemorate the dead, especially the kings, the rulers, in certain way. There is the need. हमारे यहाँ पे भी where do you find that happening? You find it very late. In Buddhism, you find stupas. Stupas are the same concept, commemorating the dead. That too, with Buddha. Not all stupas have his relics, but still, it's commemorating the dead. And then you have the, Taj Mahal, Humayun's tomb, and other tombs coming up. But if you look from the Harappan's perspective, we have very minimalistic evidence of commemorating the dead, but we do have. Right. Like Dholavira mein hi, we do have, a sort of not a stoop like, but a sort of like a small mini mound like a thing where the burial has happened. There are stones being placed on the grave and they have covered it. Then we also need to understand the megalithic culture where they use big stones, to commemorate the tomb of the dead. In southern India, there are different types of megaliths. Different types of the dolmen, the Stonehenge that we talk about. We go to UK and see Stonehenge. We have so many megalithic structures. So many. Why is it just prominent because it's in the UK? You think so? Yes, because it's been marketed. It's been marketed. And megalithic culture in South Asia it's spread extensively. You have right from Burzahum, which is in Kashmir, till the southern tip of the country. सब जगह पे ऐसे बड़े-बड़े पत्थरों के structures बने हुए हैं. हाँ, और बहुत beautiful यार. कई जगह पे तो stone cut chambers हैं in Kerala. Stones के अंदर जगह बना रखी है to live in. Yes, वहाँ पे they are like these structures. Only the reason why Egypt and the pyramids are highlighted is because also the story behind it. Yeah, it's also massive, just the Massive. size. The size behind, size, and maybe it's more alluring, but I really think that we need to start marketing our own South Asian heritage in a different way. We don't have to compare. We are not in the competition with anyone, because every place, every the culture that develops because of the landscape. We are connected to the land, and whatever we eat, whatever we do, whatever material we use, even to build our houses, it was always linked to the land. Right? Linked to the land, linked to the, small things. So we need to understand that. People keep talking about culture. Culture in very simple terms is nothing but learned behavior. How we learn to survive. How we learn to live. How we combat certain things in order to build that society and be a close-knit society, or to have a social or cultural revolution. That is what culture is. In a unbiased. I thought culture is sneakers. That's what they do nowadays, right? Ki sneaker culture aa gaya, and like t-shirts and all that. Yeah. I bet like you as an academic would just be like, what are they talking about? That's just like a small fashion culture wala part. But that's very cool. I had no idea ki there are so many structures. Are they open to the public that you can visit? I think few are. Few are not, but you can still go and visit. There are many sites where you can visit in southern India. Beautiful sites. जो ऐसा है कि sites होती हैं at least India के अंदर, जो वहाँ पे inscriptions में लिखा होता है, that's all collect scholarship, right? That people like you have dug up and then understood किसी ने लिखा है. Because I think even for the public, if you just see a bunch of stones and you don't know the context, right? It's the same as looking at a painting. Exactly. Yeah? It is. It's like if you go to a site and you don't know what exactly you're looking at, you will come back disappointed. Yeah. Because you don't know the story. At the end of the day, people need to know the story. Yeah. However you tell it, whatever you add to it, people need to know the story.
and yeah, it's the collective effort of people of ASI office who sort of write the boards and everything and inscriptions, but I think there is a need to update that. Yeah, I feel that it's too static now. Like you go to a temple and you like, I get a lot of messages from people. They must have visited a site which was open to public by ASI, but they can't, it's written on the board कि monastery है, but they don't know कि structure कौन सा है. हाँ, monastery तो बोल दिया, बोर्ड पे लिखा है, but उनको ये जानना है कि ये structure गोल क्यों है, ये structure ऐसा क्यों है. They need more information. So people who want to gain that knowledge, I think it's time that even ASI or any other department, state archaeology, whatever, we need to keep updating and especially become more tech friendly. You can't put it on board, but you can have something on the internet or you can have things digitized. Yeah. Like just I remember when I went to Europe a long time ago when I was a kid, and we did a tour of the Colosseum. Colosseum के अंदर एक there's a museum, right? As is the case for most. अगर आप रोम में चले जाओ या पेरिस के अंदर चले जाओ, वहाँ galleries होती हैं. So they have those headsets that you can wear. Yes. And you get a walkie-talkie जहाँ पे तुम अपना channel change कर सकते हो depending on your language, right? And if you pick English, they've got two kinds of tours. One, एक curator आपको live समझा रहा होता है, and the second is just as you pass through places, they show कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, but it goes into more detail than what's written on the epitaph. And that really changes your experience. That makes it more immersive. Yeah, you get connected. You understand, and then you are able to remember it for a longer period of time. अगर आप कोई चीज़ देख के आ जाओ और आपको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या थी, तो आपको समझ नहीं आएगा, right? कई जगह पे है. In India, we do have that. In big monuments, I think you have tour guides who are there to guide you through. But I think we need to get over this, need to over sensationalize things and facts. वो तो उसमें तो मजे आते हैं. हाँ, उसी में मजा आता है ना. But I feel that the hidden secrets of Harappa revealed. But unfortunately. लेकिन I think थोड़ा सा mellow down हो सकता है, especially when we are connecting with the built heritage also, like monuments and stuff. Yeah. How did you get into archaeology? I was saving it for the last. Okay. So how did I get into archaeology? It was by accident, actually. I think many archaeologists get into archaeology by accident. I wanted to pursue something else. And ended up taking history in college. And I remember the first class was on human evolution. And to be honest, human evolution school में कब पढ़ाते हैं किसी को याद भी नहीं रहता. नहीं पढ़ाते हैं यार, लेकिन हमें याद नहीं रहता है. Human evolution like 5वीं या 6ठी क्लास में या फिर you went to CBSE schools, right? ICSE. अच्छा, मैं CBSE में हमें नहीं पढ़ाया था. वो मेरे को भी याद नहीं है ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाया भी या नहीं. बट अभी भी अगर स्कूल में पढ़ाते भी तो बहुत कम उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं. बाय द टाइम दे आर इन कॉलेज व्हाट वुड दे रिमेंबर, right? And I remember my professor, she's talking about Australopithecus, she's talking about Homo erectus, Homo sapiens. And I went home and I googled, and then I was like, oh, this is interesting. And there's so many videos on YouTube, informative videos. I like, this is cool, yeah, I want to do this. And उस समय इतना कोई बताने वाला नहीं था, but I decided then that I'm going to pursue archaeology. Like there was not much guidance, I was actually looking at anthropology and wanting to pursue archaeology, but then here I am, I did pursue archaeology, and here we are. Yeah, crazy. Talking about skeletons, so I have a few doubts about that. You find a skeleton, right? At what point can you actually touch an object? Like, can you never touch them? And like, वो skeleton मिलता है, तो how do you gather it up and like store it? We can touch it, but if we are taking samples, for instance, अगर DNA का sample लेना है, तो वो हम नहीं टच करते हैं. अगर करते भी हैं तो हम हाथ सैनिटाइज करते हैं या ग्लव्स हमेशा पहन के रखते हैं. We always are in the PP sort of a kit, and तो उस समय we have to be very careful, because contamination हो सकता है. And DNA निकालना, ancient DNA in our temperate condition is very difficult. बहुत मुश्किल है DNA सीक्वेंसिंग भी करना, क्योंकि सैम्पल्स ख़राब होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. प्रिजर्वेटिव कंडीशंस इंडिया के इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट वी कैन टच.
after that if we are picking up the skeletons, but we have to keep certain things in mind. That we have to remember we are exposing something which has stayed preserved to all the elements for thousands of years. Wow. Now we are re-exposing that, in a very different environment from what it would And have mostly been. very hot. Very hot. What it would have been जब वो bury हुआ होगा. हाँ. And another thing is कि हमें पता नहीं है कि weathering कैसा हो जाए फटाफट. Environmental conditions की वजह से. So we have to keep certain things in mind when we are excavating or dealing with bones. We have to be little careful. कभी कभी हमें इतने brittle bones मिलते हैं कि हम excavate ही नहीं कर पाते हैं. इतने The moment you touch it breaks. Yeah, वो powdery हो जाते हैं. And that is because of acidity in the soil. हाँ. वाटर टेबल अगर हाई है और वाटर में अगर सॉल्टेशन है पानी में, ग्राउंड वाटर में, उसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से डिटोरिएशन हो जाता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट वी कैन टच. इफ वी आर नॉट टेकिंग सैम्पल्स, we can touch. How do you extract DNA from a... I know a study happened... Yeah. So we have taken DNA samples for Rakhigarhi also, Sonoli. And Rakhigarhi का पिछला जो excavation था, जो कि Deccan College पुणे 2018 में ना? हाँ, 16 to 18 में जो excavation था, उसमें भी उन्होंने DNA निकाला था. इसीलिए I say कि it's very difficult. Because they took out about samples from large number of skeletons. They could extract only one. Because it's difficult. Only one, and that's the study that has been done. The one sample. Usually, what we do, हम petrous जो bone, कान के पीछे जो bone होती है, यहाँ ये कान के पीछे ये वाली जो bone होती है, यहाँ का DNA जो scientists हैं, they think that यहाँ का DNA सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे DNA मिल सकता है. Skeleton पे कान होते ही नहीं है पर. कान की ये लेकिन bone तो रह जाती है ना. But I'm just confused. Petrous bone रह जाती है ना. कान तो चला right जाता here. है. ये कान यहाँ पे. हाँ. अच्छा, where the head is. हाँ. For people who are just listening, you can just look it up. ये जो पीछे जो बोन है ना कान के, तो वो बोन, पेट्रस बोन जो है, उसमें सबसे ज़्यादा DNA अच्छे से प्रिजर्व रहता है. और वहाँ का या ये पूरा जॉ का जो एरिया है, ये नहीं तो पेल्विस का जो एरिया है, यहाँ से DNA में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है. तो यूजली दे प्रेफर पेट्रस बोन. उसके बाद दे आर अदर थिंग. सो वी यूजली व्हाट वी डू इज, जब हम एक्सकवेट करते हैं, वी डोंट एक्सकवेट द अपर हाफ. हम स्कल का एक हिस्सा निकाल के, मतलब वी नो कि यहाँ स्कल आ गया है, हमें पता है कि यहाँ पे रिब्स हैं, हम इतना हिस्सा एक्सकवेट ही नहीं करते. बिकॉज एक्सकवेट करेंगे तो वो कंटामिनेट हो जाएगा. We wait for the scientists to come on site, then we excavate. So उसी समय वो sample preserve रह के वो it can go to the lab. Have you ever left stuff you found in the ground back in the ground? Yeah, all the time. Yeah. Just let it be. इतनी कोई बहुत ही रहस्यमय founding ढूंढी. Cover it. रहस्यमय founding वो जैसे कि Chariots थे ना. हाँ. Chariots को हम वापस रख नहीं सकते थे, हमें पता था. क्योंकि Chariots एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिक फाइंडिंग है. हाँ. हम उसको रीबेरी करेंगे, वी डोंट नो हमारे पीछे कौन आके दे डिस्ट्रॉय इट. बिकॉज हम जब रीबेरी करते हैं ट्रेंचेस को, वी कीप अ ब्लैक टॉप एंड देन वी पुट सेडिमेंट अगेन, मतलब मिट्टी फिर डाल देते हैं. So if you want to re-excavate, you can do that. We can open it. So we didn't. It was too risky to keep the coffins of Sonoli and the Chariots back. So for that, what we did was we cut the sediment itself. Chariots को हमने नीचे कट करके, अंडरकट करके, वो sediment के साथ ही we lift it. पूरा ज़मीन ही उठा के ले गए. How did you do that? Like in trucks? Yeah, we did that. We first we had to preserve it on site. And I think I should give credit to our director of excavation, Dr. Manjul. He's an artist. He's a painter. And his mind works in a different dimension altogether. And I remember when Chariots were, we just excavated the Chariots and it became a big thing. We were thinking whether to leave them back because we knew we were going to come back next season. But then we also knew that it's going to be too risky. Now we started thinking how we're going to lift without damaging them, because they are like internationally बहुत बड़ी बात है कि Chariots मिल गए. Because सबकॉन्टिनेंट में, पूरे साउथ एशिया में एक ही एविडेंस है ये of Chariots. यहाँ पे रथ यूज होते थे. हाँ. एंड ये डेटेड है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ. अब
ठीक है, पहले था कि हाँ मेसोपोटामिया में ओल्डेस्ट है जो अभी भी है, और इजिप्ट में चैरिट्स हैं, बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन में चैरिट्स हैं, बट साउथ एशिया में चैरिट्स नहीं है बिकॉज घोड़ा नहीं है. ठीक है, तो अभी हमें ये तो पता कि चैरिट्स है, you know, घोड़ा is a different story, it's a different topic altogether, but we know that in the contemporary world we had chariot riders, which means that people were actively fighting wars. Yes, because we found weaponry in the coffin, in the burials as well at Sonali, and that's the only site where weapons are found in the archaeological context. That's what I was saying, because in Harappan मैंने जितना भी पढ़ा है, found zero weapons. नहीं है, डिफेंसिव वेपन्स नहीं है. मतलब आपको स्वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको हार्पून्स नहीं मिलेंगे, आपको डैगर्स नहीं मिलेंगे, आपको एक्स मिलेगा, यू नो, सेल्ट मिलेगा, आपको वो वेपन अलग है, वो टूल्स अलग है, बट आपके जो फाइटिंग वर्ड्स भी मिले हैं वो सनौली के कॉन्टेक्स्ट में या ओसीपी का जो ब्रॉडर ये पूरा कल्चरल रेल्म है उसमें, right? They found harpoons in Saloni as well. No, in Sonali we didn't, but Sonali का जो कल्चर है उसमें जो होर्ड्स हमें पहले मिले हैं, जो कॉपर होर्ड्स मिले हैं, जो सनौली के ही होर्ड्स as in like treasures. हाँ, treasures. उसमें we have found harpoons as well. That's along crazy. with swords. So a weapon आपको नहीं है हरप्पन्स में, but Sonali में is the only site where you find weapons and chariots in an archaeological context, in a dated archaeological context. What's a dated context? The chariots are dated about 2000, 2100 to 1800 BCE. So have a broad date. मतलब लगभग 3000 साल बाद हरप्पन्स के. 4000. हाँ. नहीं, हरप्पन की कंटेम्प्रेरी है ये. अच्छा. हाँ. Because Harappan Civilization de-urbanization started in 1900 BCE. Okay. तो ये तो 200 साल पहले का, 100-200 साल पहले का है. And 1500 is when the late Harappan ends. So this is very much contemporary to 1500 BC, not 1500 of this. No, 1500 BCE. Okay, not the years that we live in. No. हाँ. थोड़ा confusing हो जाता है समझने के लिए. So yeah, so we do. It's a very important discovery. उसको lift करना, और पूरा का पूरा मिट्टी से है, मिट्टी के ऊपर कॉपर है. हाँ. क्योंकि कॉपर उसको एनकेजिंग करा है. वुड होगा, वुड तो डिकम्पोज हो गया, वुड बिकम्स, यू नो, मिट्टी बन गया. उस पर जो कॉपर है वही प्रिजर्व है और वही उसका मार्कर है. और उसको प्रिजर्व करके उसके साथ हमने 3-4 कॉफिन, और एक कॉफिन तो काफ़ी बड़ा है, अबाउट 8 feet है उसका लेंथ, और तीनों चैरिट्स को लिफ्ट करना, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. चैरिट्स वर कंप्लीट या रिमेन्स बचे थे? ऑफ कोर्स रिमेन्स थे, वुड तो नहीं था. हाँ. बट वुड के ऊपर जो एनकेसिंग था वो मिला था, और जो उसके अंदर का फ्रेम है ना वो पूरा का पूरा कॉपर से बना है. मतलब पाइप्स है ना वो कॉपर से. तो चैरिट के अंदर जो खड़े होने की या बैठने की जगह वो मिली है, या फिर उसके टायर में मिले हैं? सब कुछ मिला है. व्हील है ना. हाँ. व्हील मिला है, व्हील के साथ जो उसका फ्रेम अटैच है. हाँ. नीचे जो चेसी एंड जो एक्सेल है, पूरा जो सिस्टम है जो पोल और योक के साथ कनेक्ट होता है, वो सारा मिला है. That's crazy. क्योंकि बीच का जो खड़े होने का जगह होगा वो वुड का है. हाँ, वो तो डिकम्पोज हो गया. बट हम समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द, यू नो, लुकिंग एट द मेजरमेंट्स कि इतना बड़ा होगा. एंड जैसे कैसे पॉपुलर उसमें कल्चर में दिखाते हैं, आर देयर लाइक वो व्हील्स के साइड में वो भी हैं प्रोट्रूडिंग जो वो होते हैं ब्लेड्स? नहीं, जस्ट स्टैंडर्ड, राइट? एंड द व्हील्स आर आल्सो मेड ऑफ वुड, और वुड के ऊपर कॉपर है. ओके. वुड के ऊपर कॉपर डेकोरेशन है, और उसकी वजह से ही हमें मिला है, नहीं तो हमें मिलता नहीं. कॉपर नहीं होता तो वुड को निकालना, वो भी सनौली के सेडिमेंट में. ओह माय गॉड, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज सनौली का सेडिमेंट इज लाइक पत्थर. जो उसका नेचुरल सेडिमेंट, खुद का जो नेचर है वहाँ का, क्ले ज़्यादा है उसमें, तो जैसे वो एक्सपोज होता है ना तो वो और पत्थर बन जाता है, मिट्टी वो एकदम हार्ड हो जाती है. तो उसमें एक्सकेवेट करना इज़ लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल. So इस मुकाबले तो it should be pretty easy to do it in the Sundarbans, no? You सब marshy, I mean, I don't know. वहाँ पे कुछ टिकेगा ही नहीं. Yeah, but yeah, so it's a very interesting site. If people want to check it out more, they can also see the Discovery Plus documentary, right? So, yeah. Is that a good rendition of it? Yes, it is. At least the facts are there. Our director of excavation and our entire team made sure that we put out facts. And the reconstructions that have
are in the documentary are given by Dr. Manjul himself, because he is an artist. So he has visualized how the coffins, full-fledged coffins, would have been if the wood would have been there, or the chariots would have looked. What is it called? Warriors of Warriors of Sonali. Warriors. Yeah. So I think it's Secrets of Sonali. Secrets of Sonali. Secrets of Sonali. Yeah. And so he has done it to the precision. So there is no conjecture. It's just visualizing how it would look like. There's nothing fancy about it. So if people are watching, I would like them to just focus on the facts that have been presented. Of course, as a documentary, people will say, they have to masala and all that. They have to have a little storytelling also. That's just for viewers. Yeah, so that's fine. But look at the facts. Look at how in that documentary we have also tried to suggest that how we've excavated the site, how we lifted it. Yeah, I've lifted everything, from ground with the sediment, and the locals have been a great help. Sonali के 4 बजे रात तक, light लगा के उन लोगों ने काम किया है. उनको would they just do it out of like sheer fun? Yeah, it's their heritage. It's their heritage, and they know that what we have excavated is going to bring Sonali, उनके गांव का नाम ऊपर. Get more jobs, maybe more attention to the whole. More attention, and the locals are always very supportive, and they are only supportive when you involve them. You don't say, "Arey yaar, ye to इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता." When we put them at par and we give them due credit, that's when you see the whole communal support. Also because they know the lay of the land better than you do. Yes, right? yes, yeah. Even if with all your tools and all your techniques and understanding soil kaisi hai, they just would have something that's a bit commonplace but would help you massively. Like with the heat, for example. Yeah. They know a lot of things way better than us. कभी-कभी वही हमें बताते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें ईंटें मिली थी खेत के अंदर, यहाँ पे हमें ऐसा पॉटरी मिल रहा है. So they are the best guides that are available. Usually कोई भी exploration हम करते हैं field में, we always like to have a local with us, because that's easier to connect with people and also easier to understand what we're going to find where, because we have limited time. We can't excavate everything. It takes time. So we need to pick and choose. So they really help us in doing that. Yeah. Great, Disha. You do a fantastic job, and it takes a lot of passion and guts and just following what you like to do this for so long and to keep doing it. I had a great time talking to you. Same here. Thank you so much for having me. Where can people find you? You have a bunch of pages, right? Yeah. So I have a page called Confessions of an Archaeologist, where I keep updating and educating people about archaeology. And I have my own handle, Disha Ahluwalia, on Instagram. They can find me on Facebook, Instagram, Twitter, anywhere with these handles. Yeah, they are also available on all social media platforms. And is there any on the page you just post whatever is happening, your BTS, behind the scenes of the scenes, and also a little bit about archaeology, but in an unbiased way and more researched manner. Like, I don't believe in posting anything just for the sake of posting. Right. We have a team and we work hard in bringing out content which is authentic. Fantastic. Yeah. I've checked out the page as well. It's a mixed bag of things. Yeah. But thank you so much for doing this. Thank you. Thank you. For having me. This was Dostcast, and we'll see you next Tuesday or Friday. Take care. Bye-bye. Don't forget to subscribe.